Hello, assalamu alaikum, everyone. So basically, so last workshop में हम लोगों ने discuss किए थे all the basic topics of GitHub और all the terminologies that we were using about GitHub. उसके अंदर different चीज़ें आ जाती हैं branching, forking, pull request and merge request as well. So आज उन सबको हमने implement करना है from the uh, start, from the scratch. We will be setting up GitHub account and then actually, we set up the GitHub account. We'll be adding SSH keys into our PC to create a remote connection between the GitHub account and our local machine. And then we'll be using few of the GitHub practices to just get it in. So yeah, let's get forward with it, and let me share my screen as well. Okay, cool. I think you guys can see my screen now. So let's go towards to the slides. So previously what we discussed is so again, so my name is Raheel Siddiqui. I'm GitHub campus expert from Karachi, Pakistan, and I'm currently studying at Osman Institute of Technology, Karachi. And if you want to get connected with me, you can just go to my website. I recently coded it on Vue.js, and you can have a look at that. I'll be going open source with it really soon. So yeah. Other than that, so uh, last week's agenda was about these particular topics that we discussed, and so we discussed all the terminologies, all the theory part of these topics last week. But for today, we have the practical stuff to implement these all of the practices. For example, we'll be exploring repositories, branching, creating branches, creating pull requests, and then merging those pull requests as well. So let's move forward with it. आई होप कि आप लोगों ने गिटहब अकाउंट अपना सेटअप कर लिया होगा जैसे कि हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था बट द थिंग इज इफ यू हैवंट डन इट सो यू कैन जस्ट गो टू आवर लाइव स्ट्रीम फ्रॉम प्रीवियस week and check out Jadu Jobs Facebook or LinkedIn page. So the live stream is there as well. So moving forward, so there's this just this theory concept that I need to discuss with you guys. Uh, so it's about staging concepts. So what are staging concepts and what is the flow of Git process? So first of all, we have three or four environments. The first one is working directory, जो कि हमारी local machine होती है. Okay, and then उसके बाद होता है हमारा staging area, which is the middleware between the working directory and then the local repo as well. So and then after that we have local repo and then the remote directory. Directory is the repository on GitHub as well. So what's the flow, what's the process? तो बीच में जब भी हम कोई काम करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी कोड में अपनी चेंजिंग की है, so to finalize it I will be pushing to the staging area. Staging area is something between the remote repository and then my local repository, my local code. जब भी मैं स्टेजिंग एरिया में कोई चीज़ पुश कर देता हूँ, तो एक काइंड ऑफ मैं उसको फाइनलाइज़ करता हूँ एंड देन जस्ट चेक इट, फाइनलाइज़ इट फ्रॉम देयर कि जो भी मैं अपने प्रोडक्शन पे फॉर इंस्टेंस रिमोट रिपॉजिटरी पे पुश करने वाला हूँ, इट इज़ फाइनलाइज़्ड और इज़ इट वर्किंग रियली रियली वेल। सो स्टेजिंग एरिया पे जब भी मेरा कोड पुश होता है और अगर मुझे स्टेजिंग एरिया में पता चल जाता है कि जो मैंने कोड किया था, इट इज़ नॉट वर्किंग रियली फाइन, so I'll just change it into the working directory. अपनी local machine में जो भी changes होंगी वो मैं करूँगा and then I'll just shift towards to the staging area. मैं उस code को staging area में भेज दूँगा and then it will I will just label it. I will just give it a commit कि मैंने इस code में क्या किया है and then I will push it to the remote repository which is on GitHub as well. सेम प्रोसेस है अगर मैंने वापस कोई किसी मतलब हम लोग
एक प्रोजेक्ट पे 2 डेवलपर्स काम कर रहे हैं, मेरे दूसरे डेवलपर ने कोई चीज़ पुश की है रिमोट रिपॉजिटरी पे एंड आई वांट टू गेट दैट changes in my repository in my local machine as well. So I'll first of all run git pull command, which will pull all the changes from that repository as well, from remote repository. And then if there is like another branch, so I can just simply check out to that branch and can merge to that branch as well. So आई होप अभी क्लियर हो गया होगा कि एक लोकल डायरेक्टरी होती है, एक स्टेजिंग एरिया होता है एंड देन देयर इज दिस रिमोट रिपॉजिटरी. जस्ट रिपीटिंग इट अगेन, लोकल डायरेक्टरी या वर्किंग डायरेक्टरी वो होती है जिसके अंदर हम लोकली जो भी चेंजेस कर रहे होते हैं वीएस कोड में. एंड देन स्टेजिंग एरिया में जब भी कोई चीज़ आती है, इट्स लाइक बिटवीन के हमने वो सब डन करके अपने लोकली फाइनलाइज कर दिया है. एंड देन ऑन द स्टेजिंग एरिया वी विल जस्ट टेस्ट इट कि जो भी किया है वो सही किया, एंड देन पुश इट टू द remote repository. So that's the thing. So let's move forward. उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है? So we'll have to add SSH key to create a remote connection between our uh, लोकल मशीन एंड दी गिटहब अकाउंट एज वेल. तो वो रिमोट कनेक्शन इसलिए बनाना पड़ता है कि एक कनेक्शन बिल्ड हो जाए मेरी लोकल मशीन का और मेरे गिटहब अकाउंट का. उसको एक की देनी होती है, एक मैं यूनिक की जनरेट करता हूँ अपने लिए, ताकि मेरे गिटहब अकाउंट को पता हो कि मैं जो भी चेंजेस कर रहा हूँ वो किस पीसी से हो रही हैं, कौन बंदा वो चेंजेस कर रहा है. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद इट. Okay, so it is really really simple adding the SSH key, and I have few of these steps here. So what you should do is you can always go to the settings of your GitHub. Let me show you guys as well. So when you search github.com and if your account is login, you can go to this settings as well. So whenever you go to settings, you can go here SSH and GPG keys. Okay, so this is really really simple. You can just go here and add the SSH key. So how you are gonna add that SSH key? So first of all, as you can see, I have added 3 SSH keys. मेरे GitHub account को पता है कि मेरे 3 पीसीज हैं जिसके ऊपर मैं मोस्टली काम कर रहा होता हूँ. The first one is Windows PC, and then one of my Mac, and then another one is the laptop from my office. So हर किसी की एक यूनिक SSH की होती है, और जब भी मैं कोड पुश करता हूँ तो मेरे GitHub अकाउंट को पता होता है कि इसने किस मशीन से पुश किया है. सो फॉर क्रिएटिंग द एसएसएच की फॉर योर सेल्फ, तो व्हाट यू शुड डू, you can go to this generate SSH keys option here, as you can see, and as soon you click on this option तो आपको navigate कर देगा on this page. So this page will show you कि आपने generate SSH key and adding it to the SSH agent. You will be selecting this one, adding a new SSH key to your GitHub account, the fourth one. Okay, so नेक्स्ट स्टेप्स में पर्टिकुलर आपके पास ऑप्शंस होंगे, फॉर एग्जांपल जनरेटिंग अ न्यू एसएसएच की, and then adding your SSH key to SSH agent, and then copying it and adding it to your GitHub account. So first of all, you have to run this, copy this command, and then paste it on your terminal, okay, on your local machine terminal. और इसके अंदर आपने वो ईमेल रखना है जो आपने GitHub में यूज़ किया हुआ है मोस्टली. And then after that you'll have to add the SSH agent by this command evil. Okay, as soon you run it this command, and then you can just create a file where you can save your SSH key as well. So आपने फिर थर्ड स्टेप में ये रन करनी है कमांड अपने टर्मिनल पे, सारी कमांड्स आपके टर्मिनल पे रन होंगी. ओके, अदर देन दैट अगर ये आप पीपीटी फॉलो नहीं करें, यू कैन ऑलवेज गो टू द सेटिंग्स, और उसमें बहुत डिटेल्स की इसकी रीडमी लिखी हुई है, यू कैन ऑलवेज फॉलो इट एज वेल. तो मोस्टली इसमें कुछ कुछ केसेस होते हैं कि आपको थोड़े प्रॉब्लम्स आते हैं, बट द थिंग इज के फॉर लिनक्स यूजर देयर आर सम फ्यू ऑफ द डिफिकल्टीज एज वेल, बट अदर देन दैट ये उसमें हर किसी एक मैक के लिए, विंडोज के लिए और लिनक्स सिस्टम के लिए अलग अलग गाइड दी हुई है. सो as soon you add that SSH key, उसके बाद आपने कमांड रन करनी है. what it will do, it will just
copy your SSH key. So there are like two types of SSH key. One is public and one is private. So public वाले अभी copy करेगा और आपके GitHub you can just go to your GitHub account and then add it by yourself, जो कि अभी मैंने यहाँ पर दिखाया था. Just click on new SSH key and then you can add or name it anything and then add the SSH key as well. So so now the GitHub account is set up, the SSH key is added. So now it's time to get your hands dirty as well. So let's move forward with the commands. So they are like basic commands. So the first header is for adding username and email. So for your PC it is mandatory कि आप अपने PC को बताएं कि आप जिस भी नेम से पुश करना चाहते हैं अपने GitHub अकाउंट पे, क्योंकि जब भी आपके लॉग्स जनरेट होंगे आपकी कमेंट्स के जो भी आपने चेंजेस किए हैं आपके GitHub अकाउंट में वो इसके हिसाब से चेंज होंगे. सो इफ योर नेम इज राहिल सिद्दीकी तो वो बता रहा होगा कि राहिल सिद्दीकी ने ये चेंजेस की थी. एंड देन यू कैन ऑल्सो ऐड द ईमेल एड्रेस, और ये ईमेल एड्रेस कोशिश करिएगा कि जो आपने एसएसएच की जनरेट करने के लिए यूज़ किया था आपने गिटहब अकाउंट में यूज़ किया हुआ है वही सेम यूज़ करना है. सो इट इज़ बेटर. After that, what you can do, so we are not focusing on this one. Basically this one is for if you have any existing project in your local machine and then you want to connect that project to the GitHub repository, तो आपने connection कैसे बनाना है. We're going to also discuss it, but as soon we create the repositories, we will discuss it. So after that, what you can do is you can go to your GitHub account first of all, and so I have different repositories. So let me create one repository as well to give you guys a demo. So my SSH key are added, my GitHub account is set up. Now I'm gonna create my new project. Okay, so I'm gonna click on new repository name. I'm gonna just name it Jadu Test Repo. Okay, and then I'm gonna just leave it empty. I'm gonna do it privately, so as I am recording a demo for you guys, so I'm just gonna leave it private. You can always go public with it. So public में आपको सब कुछ दे सकते होंगे and private में it's only for you. So there are like different options: add a readme file, add dot git ignore file, and then choose a lessons. I'm gonna be explaining them step by step. So readme file वो फाइल होती है आपने जो भी अपने प्रोजेक्ट में काम किया है. फॉर एग्जांपल लेट मी गिव यू an example. So if I go to any repository and as I have created this desktop application, okay, so this is my code and I am telling everyone what I did in the code or maybe how to install my code as well. So आप जितनी भी documentation होता है वो you can do it into the readme file. So I am adding the screenshots to make it cool, and I am adding different commands to run it as well, to set up the project as well. So this is what you can do also in the readme file. Other than that, .git ignore file. So whenever you create a project, for example Python का project आप create करते हैं या फिर React का या फिर Vue.js का project कोई create करते हैं, so there are like different files who are generated automatically. For example, you don't want to push your virtual environment folder to the repository because it has like too much libraries and you don't want कि वो इतना ज़्यादा heavy हो जाए आपका folder and then mess up हो जाए. So you can click on dot ignore and यहाँ से आप जो भी language में काम कर रहे हैं ये आपकी सारी फालतू files ignore कर देगा. And you can always edit git ignore file. कि आपने कोई आप configurations थी, आप कोई maybe लॉगिन साइन अप के लिए कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, आपकी एक फाइल में लॉगिन साइन अप के क्रेडेंशियल्स हैं, तो आप वो पुश करना नहीं चाह रहे, सो यू कैन जस्ट लीव इट इनटू द डॉट गिट इग्नोर फाइल और वो इसको पुश ही नहीं करेगा गिटहब पर. दिस इज लाइक सिंपल एज वेल. So you can just search Python from here. So I'm not gonna select. Okay, let's select Python. Okay, so dot git ignore file में Python है मेरा और licensing में. So for the open source
as we discussed in the last workshop, so open source is something, is your project which can be used by anyone on the internet. And so you can always set different licensing methods with your open source projects के उसके अंदर कुछ rules and regulations लगा सकते हैं. So it could be कि आपका कोई commercialize ना कर दे project, it could be like that, something like that. So there are like different type of licensing. I'm not gonna go towards each one of them, so I'm gonna just select one which is like the neutral MIT license, and let me add the readme file as well. So I'm gonna create my repository here. As you can see, my repository is created. And so if you have any project जो कि already set up हुआ है, तो आप simply ये remote command copy करेंगे और उस फोल्डर में जाके अपना टर्मिनल ऑन करके रिमोट कनेक्शन बना देंगे. इट इज़ लाइक दैट सिंपल. बट इफ़ यू वांट टू बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच, you can just copy it and then clone it in your VS Code like that. So as you can see, I'm gonna create a new terminal, और मैं यहाँ पर git clone repository का नाम लिख दूँगा. Okay, so it is telling me that it is cloning Jadu test repository. Okay, so fine. So the repository is cloned, as you can see right here. So let me just go into Jadu test repository. So as you can see, we have .git ignore file. हमने Python की select की थी. So we have this one. We have .python builds नहीं जानी चाहिए हमारी, ये wheels नहीं जाने चाहिए, ये files नहीं जानी चाहिए जब भी हम push कर रहे हैं. So which is gonna save you a lot. As you can see, virtual environment नहीं जाना चाहिए. So this is something really good. लाइसेंसिंग में बताया गया है लाइसेंस के बारे में, एमआईटी लाइसेंस के बारे में. एंड देन in readme we can add any type of documentation. So what I'm gonna do, first of all, so last time हमने ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था. So let's see कि अभी हम कौन सी ब्रांच में हैं. So git branch कमांड जो होती है वो आपको let me clear it, then git branch. So right now, as we discussed in the previous workshop as well, कि default branch main होती है. Okay, we can create different branch from main as well, and then push it to the towards to the main. So this is the thing. So for example, so let's assume two of the developers are working on a project. So I am developer one, and then there is developer two. So I'm gonna create a file called hello world.py. Okay, so I'm gonna print hello, this is developer one, and I'm gonna name myself as well Raheel Siddiqui. Okay, so as you can see, I have added one file. It could be a really lengthy code as well, and it could be really multiple files as well. So what I have to do is that so I know the code is good. So now I'm going to push it to the staging environment. To push my code into the staging environment, what I can do, so before that I'm going to show you this cool thing. So here you can see on your VS Code, you can just go into changes and you can see कि आपने क्या क्या changes की थी. ये आपको पूरा बता देगा कि आप क्या क्या change करते रहे, तो पहले code कैसा था, इस type का. So this is really cool. You can also add your files into the staging from here and commit it from here as well to automate this process. But we are going to be using the terminal approach. So let me check git status. So git status is going to tell me कि मेरे पास क्या क्या changes हुई हैं, मेरी repository का क्या status है. So first of all, it told me कि I am on main branch, and the changed file is hello world. It needs to be added into the staging environment because it is untracked right now. Untracked इसलिए क्योंकि वो staging environment में नहीं है. So to add it into the staging environment, what we are going to do, we are going to run git add command. So these all commands are here as well: git add dot, git commit, and etc.
So स्टेजिंग एनवायरनमेंट में ऐड करने के लिए भी दो तरीके होते हैं. You can just add all of your files into the staging environment, or you can select a particular file. For example, I'm going to select hello world.py. I'm going to add a single file. अगर आपने सारी फाइल्स ऐड करनी है तो आप सिंपली करें git add dot enter. आपकी सारी फाइल स्टेजिंग में ऐड हो गई हैं. सो नाउ एज यू कैन सी अब चेंजेस अभी बता रहे हैं कि कोई ग्रीन और रेड का इंडिकेशन ही दे रहे हैं यहाँ पर. ओके, सो नाउ व्हाट वी आर गोना डू इज कि अब मैंने गिट ऐड करके अपनी एक फाइल स्टेजिंग में ऐड कर दी ऑलरेडी. नाउ आई एम गोना गिव इट अ कमिट, गिट कमिट -m. कमिट क्या करेगा, पहले तो आप कमिट में एक मैसेज लिख सकते हैं कि मैंने क्या क्या चेंजेस किए हैं इसके अंदर. एंड देन कमिट क्या करता है, एक SHA कोड हैश असाइन कर देता है आपकी ऑब्जेक्ट को, ब्लॉब ऑब्जेक्ट को. बेसिकली ब्लॉब ऑब्जेक्ट बना देता है एंड देन इट इज़ गोना असाइन यू एन SHA की, जो कि आपके चेंजेस को यूनिक बनाता है. और आगे जाके आपको कभी ऐसा लगा कि मैंने भाई कोई बहुत बड़ा भंड कर दिया, कोई ख़राब कर दिया अपने कोड में, सो यू कैन ऑलवेज गो टू दी प्रीवियस कमिट एज वेल, जो कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था. वर्जन कंट्रोलिंग में हेल्प करता है गिट आपको. सो गिट कमिट -m added hello world. Okay, fine. And then so for the first time I'm gonna push to the GitHub account. So let's check my GitHub account. This is the repository that we have right now. Okay, this is the repository. Readme file, git ignore license, readme. So now, so they are like really simple process. Git add, git commit, and then git push. Now I am sure कि मैंने changes की थी वो सही है. And then I'm gonna push from staging environment to my remote repository. So I'm gonna use git push -u origin के बाद आपने लिखना है main, जिस भी branch आपने push करने वाला है. So I'm gonna use my main branch to push it. So I'm gonna use main. So as soon I hit enter, so it is gonna push my all of the code into my GitHub account. So if I refresh it, so as you can see, I have added hello world.py. So you can see print hello, this is developer 1 Raheel Siddiqui. और यहाँ पर आपको एक ब्रांच भी आ रही है, यहाँ पर बता रहा है कि कमिट है, और ये जो मैंने SHA की बात की थी ये है. दिस इज द यूनिक वन. ओके, सो एंड इट इज गोना टेल यू कि क्या क्या चेंजेस हुई हैं इसके अंदर. ओके, ये हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था पूरा. अदर देन दैट, सो नाउ व्हाट वी कैन डू. So we have successfully connected the GitHub account to our local machine. We have added one file, and then we have connected. We have successfully tested कि हमारा local machine और GitHub account connect हो गया, and we have pushed the code as well. So for example, आपके group में एक developer ने कर दिया, and then now you have second developer. So what he's gonna do? He's gonna create a new branch. Sorry. Git branch. Let's create branch dev2. Let me just clear everything. Clear git branch dev2. So now, how many branch do you have? You have 2 branches right now. So we have created another branch. अब जो भी उस branch में काम होगा, it is not gonna affect my main branch as well. So what I can do is git checkout dev2. इस कमांड से ये होता है कि हम अपनी जो मेन ब्रांच से जिस भी ब्रांच में शिफ्ट करना होता है, या फिर जिस ब्रांच से भी जिस ब्रांच पे शिफ्ट करना होता है, वी कैन easily just shift it towards it. So I'm going to shift towards dev2 branch. Hit enter. अब मैंने जब चेक किया, so it is also navigating me get switch to branch this, and when I'm checking the status of my branches, so I am on dev2 branch as it is green right now. So now what we are gonna do is, okay, we are gonna add a line here. Okay, I don't know if Arsalan is still here, so
because his internet connection is not stable right now, so I'm gonna add his name, developer to Arsalan Khattak. Okay, I hope the spelling is correct. So now the developer too has done few of the changes into the code. अब अगर मैं इसका स्टेटस चेक करता हूँ गेट स्टेटस, सो अब इस फाइल में मॉडिफिकेशन आ गई हैं हेलो वर्ल्ड की फाइल में, एंड इफ गोना चेक इट तो ये देखें यहाँ पे बता भी रहे कि इट इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग टू इट। अगर मैं यहाँ पर भी कुछ चेंज कर देता हूँ तो यहाँ भी बता रहा है कि इसको रेड से इसको रेड कर दिया है, और यहाँ बता रहे हैं देखें यहाँ पर इसने ग्रीन के ऊपर एक ग्रीन कलर कर दिया है कि इट हैज़ चेंज फ्रॉम हेयर। सो व्हाट आई एम गोना डू सिंपली is follow the same process, git add hello world.py। अब मैं एक ही फाइल ऐड कर रहा हूँ, git commit -m added dev to branch या फिर dev to thingy कुछ भी कर दे। So I'm gonna push it to the git push -u origin, so we have dev to branch। So it is done, it is pushed to our GitHub. Cool stuff. So as you can see that we have added another branch dev2, and you can simply say it। यहाँ पर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पहले मेन ब्रांच है जो कि हमारी डिफ़ॉल्ट ब्रांच है, एंड देन वी कैन सी आवर dev2 ब्रांच। अगर हम मेन ब्रांच में hello world.py चेक करते हैं, इट इज़ नॉट अफेक्टेड। और अगर हम सॉरी अगर हम dev2 ब्रांच में जाते हैं एंड देन देखते हैं, so now we can see the changes right here। Okay, so to push my code, developer 2 code into the main branch, what I'm gonna do, so as we discussed previous week, pull requests and then merging, so now we're gonna implement those practices right here। So to create a pull request, you can easily just click here and open a pull request, click here। अगर आपके जो भी changes होंगे आपको ऑप्शन दे रहा होगा open a pull request, सो यू कैन क्लिक हेयर, और आपने कंपेयर करना है दोनों ब्रांच को। बेस ब्रांच वो होती है जो कि आपकी डिफ़ॉल्ट ब्रांच है जिसमें आपने मर्ज करना है एक्चुअली, और जो आपकी अभी जिस ब्रांच पर है वो ये वाली है। एडिट डेव टू थिंग यहाँ पर मैं कर देता हूँ developer to code, so you can write the description here के edit line for developer to in hello world file, something like that। अगर आप कोई अगर if you are working in a company or firm, so you are gonna explain everything right here कि आपने क्या किया है, क्यों किया है, इस टाइप का पूरा आपने डिटेल्ड करना होता है। So now I'm gonna create a pull request simply। You can also make it fancy from here कि bold कर दें, heading बना दें, and then connect a link। Usually यहाँ पर मैनेजमेंट टूल्स के, जीरा के या फिर ट्रेलो के लिंक्स यहाँ पर पेस्ट हो रहे होते हैं, बट वी आर गोना जस्ट क्रिएट अ सिंपल पुल रिक्वेस्ट राइट हियर, create pull request, and then we have one open pull request। By the way, that is how you are going to contribute open source as well। So यहाँ पर आपने एक pull request open कर लिया है successfully। If I'm gonna go to the Jadu test repo, so I'm gonna see here pull request create हुई भी एक। तो if they are like different developers या फिर एक ही developer ने 2 3 4 फाइल्स ऐड की हैं, कुछ भी किया है, तो there will be like different pull requests right here। So as we have only single change and we have created only one pull request, so last time हम लोगों ने Python की repository पे भी देखा था ये पूरा process कि क्या होता है। So what I'm gonna do is I'm gonna go into this branch and I'm gonna check first कि क्या क्या changes हैं। सबसे पहले commits देखूंगा मैं। Okay,
dev2 thing इसने कुछ ऐड किया है, and then I'm gonna go to the files changes. तो मैं यहाँ पर इसको देखूँगा कि क्या चेंज हुआ है। सो दिस इज़ द वन जो कि पहले से था, एंड देन दिस इज़ द रिसेंट चेंजेस। तो अगर मुझे लगा कि कोड सही नहीं है, आई एम गोना जस्ट कमेंट इट के कैन वी प्लीज गो विथ iterative approach, something like that. Okay, so I'm just giving it a review. So these are only for uh, giving reviews to your developers as well. So yeah, for conversations, you can do your conversations and everything right here. So if everything is sorted, you can just mark it के uh, जो भी हमारी रिव्यूज चल रहे थे वो अब सॉर्ट हो गए. So what I'm gonna do is I'm gonna go to the pull request and I'm gonna accept it. I'm gonna merge it. So I'm just accepting कि जो भी changes किए हैं दूसरे developer ने, they are fine. They are good to go. He did a great thing. So जो कि manage कर रहा होगा project या फिर जो main branch है जिसके बाद access होगा, he can do merge pull request. So here you can select different things. Create a merge commit is the simplest. Squash and merge, जो कि एक कमिट होगा वो ऐड हो जाएगा, जो भी एक कमिट हुआ हुआ है मर्ज हो जाएगा उसके अंदर. एंड थर्ड वाले ऑप्शन में ये होता है कि अब ब्रांच ही रिबेस हो जाती है टू दी बेस ब्रांच में. And then what I'm gonna do, so if there are like any type of conflicts के आपके पास वो चेंजेस नहीं थी जो ऑलरेडी मेन ब्रांच में है. फॉर एग्जांपल अगर राहिल सिद्दीकी की जगह पे कोई आगे फुल स्टॉप भी लगा हुआ था, सो आई डिडंट हैड दोज चेंजेस, सो इट इज़ गोना नेविगेट मी कि आपके पास मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, पहले तो इनको ठीक करो फिर आगे मूव करो. सो वी आर गोना discuss these things in advanced tutorials as well, जिसमें हम maybe GitHub Actions की side पे जाएं for the CI/CD and stuff. But this is like a basic tutorial, so we're gonna just discuss these things. So the pull request is open now. I'm gonna merge it right here. So okay, confirm merge. So kudos, and finally we have merged our first pull request into our main branch. And if now I go towards to my main branch, पहले सिर्फ हमने देखा था कि dev2 ब्रांच में मसले होते थे और dev2 ब्रांच में ही changes आ रहे थे. And if I'm gonna go towards hello world.py, so I'm gonna see my changes right here, which is really cool. Okay, so now what we have discussed so far is we have created a GitHub account, we have connected our local machine to GitHub account, we have completed the practice of all the things we discussed last week into the first live stream. We have implemented it, and we have seen a staging environment, developer environment, production environment, yeah, remote repository kya hoti hai. And then we have also implemented the basic git command as well. So now we know कि branch कैसे create होनी है, what is the uh, purpose of creating a new branch ताकि वो असली branch को affect ना कर दे. And then we know git add, git commit, git push कैसे होता है. So yeah, I guess we are good to go with the practice. I don't know if Arsalan is here. Arsalan, are you here? Okay. Arsalan is still lagging. Okay. So Arsalan के connections का थोड़ा मसला आ रहा है, so I'm gonna sum up the session as well.
So the first thing is कि अभी जो हमने पूरा process देखा, you can also do it with forking, and you can also create an different organizations. If you are working on a really big project, like we discussed last week के Python हमने देखा था, Python GitHub. I don't know why it is taking too long to search it. But if you're gonna go to any organization, you're gonna see different repositories there. जैसे कि ये वाली है एक, you can create multiple projects. You can create multiple projects into one organization, like that. Or you can just add the collaborations, और जो भी developer collaboration कर रहे हैं repository में, you can add them and you can follow the same practices as well. So I think this is all, these all are the practices that we have done. So other than that, if so for the Jadu, we have discussed how Jadu is contributing and how Jadu is working towards creating an impact in Pakistani students learning as well. So you guys can check the social medias, and you can apply to the into the new cohort to get and the hands-on experience into the different new technologies as well, and to learn to adopt those technologies as well. So for that, you can just check out the social media platforms. You can approach to any team members on LinkedIn as well. Other than that, you can always connect with Arsalan for any query you have related to Jadu. And yeah, you can also connect with me on my GitHub, and follow me on GitHub, and connect me on LinkedIn or Twitter as well for the queries, for the GitHub queries, and for related to Python and JavaScript queries as well. So I hope you guys enjoyed these 2 weeks of live streams, and let us know if you want uh, any other topics to be discussed in these live streams, and we're definitely going to do it. So for that, yeah, this is all from our side, and see you into the next stream as well. So Allah Hafiz, guys.